Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas. Hello everyone, hope you all are doing well. Akshat here. मैं इस वक्त अजमान में हूँ and फिर I'm gonna go to दुबई मोटर शो और दूर है यहाँ से. It's in World Trade Center. टाइम लगता है. फ़िलहाल तो हम पैदल मार्च में और got all my stuff packed in the backpack. They always be smoking like a rasta. Cocaine on the table. तो दोस्तों तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट चलने के बाद हम लोग मसाला बस स्टेशन पे पहुंच गए. तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं यूनियन बस स्टॉप पे पहुंच गया हूँ और यहाँ पे मेरे पीछे मेट्रो ट्रेन है. तो वहाँ से आके अब हम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाएंगे. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center. 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद we have finally reached into the World Trade Center. Fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Rock star, rock star, rock star, rock star. वॉक्सवैगन पाकिस्तान में तो इतनी फेमस नहीं है लेकिन दुबई में इट्स लाइक अ रियली बिग डील. तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं द लेटेस्ट वॉक्सवैगन गोल्फ एंड ये इनकी रैली कार है. तो दिस डिस्प्ले इज़ ऑल अबाउट कार्स और वॉक्सवैगन की और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं. पाकिस्तान में अनाउंस हुआ था कि एक वर्कशॉप खोली जाएगी एंड एक फैक्ट्री लगाई जाएगी एंड एवरीथिंग, बट पॉलिटिक्स टुक ओवर और व्हाटसएवर. तो this is their latest innovation. This is something around 230 brake horsepower, 6-speed manual transmission और खूबसूरत है बहुत. I like it. मतलब मेरी personal favorite गाड़ी अब Volkswagen हो गई है, Golf GTI. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad bitches, jumping in the pool and I ain't got on no bra. तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जीप का स्टॉल है एंड जीप पाकिस्तान में इतनी फेमस नहीं है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में अदरवाइज इट्स वेरी बिग डील. तो इनके बहुत सारे फ्लैगशिप ज़बरदस्त मॉडल्स हैं, लेटेस्ट मॉडल्स हैं और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आने की है वो ये है कि आप इनको चेक कर सकते हैं, अंदर बैठ के देख सकते हैं एंड एवरीथिंग. Let's see a few cars around. Acting out of pocket, trying to grab up on my pants. On their bitches in my trailer, said I ain't got a man. And they all brought a friend. Yeah, hey. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. तो ये एक जानी पहचानी गाड़ी है, Lexus CT200 और पाकिस्तान में काफ़ी फेमस है आजकल. मेरे ख्याल में PS के मुकाबले की है. दिस इज़ ओरिजिनली लेक्सस कह सकते हैं टोयोटा का एक साइड वर्जन है. जिस तरह मर्सिडीज़ में शायद AMG या प्राविस वगैरह आते हैं और ये एक ऐसी गाड़ी है जो पाकिस्तान में आजकल लोग ख़रीद रहे हैं, पसंद करते हैं. लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे ऐसी है जो पाकिस्तान में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, किसी ने इम्पोर्ट वगैरह नहीं कराई. दिस इज़ अ लेक्सस ES हाइब्रिड. तो दिस इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट और मेरे ख्याल में शायद प्रीमियम वगैरह कंपेटिटिव आप कह सकते हैं आ सकती है. एंड इट्स वेरी लग्जूरियस ह्यूज कार.
रिलीज़ कर ली, टेस्ट, इनोवेशन, इन्वेंशन या व्हाट एवर यू कॉल इट, एंड इसको कहते हैं प्रोजेक्ट 1। पिछले दिनों इसके बड़े चर्चे हो रहे थे। तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। और ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, 1.6 लीटर V6, 16 सीसी, 500 किलोवाट डिस्प्ले आउटपुट, फ्रंट व्हील ड्राइव आउटपुट, रियर व्हील ड्राइव आउटपुट, 1000 हॉर्स पावर, 1600 सीसी में से 1000 हॉर्स पावर। आई मीन लाइक इट्स अमेजिंग, हु डज दैट? दिस इज सो अमेजिंग, प्लग इन हाइब्रिड। And we have this, the GLC 254 Matic. अच्छी है। Look at this beautiful hatchback, खूबसूरत AMG A45। Oh my God, oof, ऐसे जिन भूत लगता है यार। Gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I am cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day. Never forget this day. I'll never forget this day. Forget this day. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I am cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now